Hello students, welcome to MGM Education. We are going to study summarizing, how to make summarizing including notes making or outlines. Okay, you see students, this year you will be getting 7 plus 8, 15 marks, notes making plus summarizing from English 3. Okay, now we will move to page 114, 15 and 16, which covers the contents relating to summarizing. Okay, now have the attention that how really summarizing is to be done. But prior to do that, you should know what exactly summarizing means, right? See students, summarizing is not at all a difficult task. Summarizing implies just reducing the size of the paragraph. Okay, two steps action this is. Step 1, reduce the size of the paragraph. Step 2, modify the sentences. Right? So by reducing, here you can see it is written, read the original passage and identify the main points. Then after identifying the main points, you prepare a draft summary. In draft summary, you have to mention only the main points. Here you have to give the points 1, 2, 3, 4. Again, subheadings if needed. See, heading, subheading. On this basis, you have to divide. So, two things are important. Step 1, you have to reduce the size. Step 2 is the modification. Here, see students, some long expressions are changed to, right? This is called modification. You have to modify the sentence like this. For example, the public sector industries in India implies our public sector industry. Another example from my side, I am telling you, you listen. There are other sentences down, you see this. My sentence, you see. The people of India, you can write as Indians. This is modification. Up. Okay. So, by this way, on one hand, we have to reduce the size of the paragraph, and on the second hand, we have to modify the sentences. Means, we have to change the sentence, but not the sense of the sentence. Remember this. All the sense you have to gather and modify into your own language and reduce the size. Let us see in this page 115, there is a paragraph regarding the failure of public sector industries. I can show you here one thing. The first two and half line is there. I am reading this, you see. It is said to know, it is sad to note that the public sector industries in India subject to failure. There are many shortcomings that contributed to the failure of public sector industries, and so on as it follows. There are several reasons, okay, shortcomings are as follows. So how many lines these are, students? One, two and half. So this can be written in one sentence. Let the sentence be like that. Just change the sense. Or the causes of failure of public sector industry. This one line is enough for this two and half line. Now causes will be given here. You see students, here given the causes first, and then in between there is secondly, thirdly, four causes are given here. When you read these sentences, you collect the sense from the sentence, then try to modify and reduce it. So for the students, those who can read and understand the paragraph, for them it is not a problem. But the students who are poor in understanding the paragraph, there are some techniques you have to follow. Acha. What is the technique? You see, whenever you read, you have to find out the repeated lines, if any. Right? So the repeated lines can be known from a clue. See, in this paragraph, we are now reading about what? The paragraph, that is the failure of public sector industry. So we have to reduce the size of the paragraph. For this, what things we have to take out?
First of all, we have to account that. See, again, I am repeating two steps: reduce the size of the paragraph and modify the sentences. Now, the question is how to reduce the size of the paragraph. So, certain things, students, have attention, please. You have to take out. Number one, examples. Number two, adverb and adjectives. Number three, irrelevant lines. Number four, repeated lines. These four things you have to take out while reading a paragraph. Please identify them and take them out or modify them or reduce their size. For example, in the first sentence you see here in the page 115 of English 3 book, I am reading this. First, they are means what? Public sector industries are run on government funds under the control of autonomous corporations which have their peculiar way of functioning, that is on non-business like principles. एतिके तुम पढ़ लो पिला माने अंडरस्टैंड करो कौन जेटा नॉन बिजनेस लाइक प्रिंसिपल रे चालुची ऑटोनोमस कॉर्पोरेशन द्वारा एटा रन होची बोला तापर एठी गोटे क्लू देखो इन अदर वर्ड्स अन्य अर्थ रे कहबा गले it may be said that they are not run on commercial basis. देखो non business like principle देला इदेला run on non commercial basis हैला हेले हम कोन पढुचे सेटा माइंड रे थिबा पिला हम कॉजेस ऑफ फेल्यूर ऑफ पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री पढुचे नै कि तो एटा गोटे कॉज किंतु ए लाइन ता देखो तापर कोन आउची इट इज इनकरेक्ट टू बिलीव दैट दे आर मैनेज्ड ऑन नॉन कमर्शियल लाइंस एज दे शो सम प्रॉफिट बोलछ से किछि लाभ मिलुचे ना हेले हम नॉन कमर्शियल बेसिस बोल केमति कहबा नाही बोलछ आउरी गुड कंडीशन दोछ इफ रन ऑन कमर्शियल लाइन दे कैन शो स्टिल बेटर रिजल्ट अच्छा आउरी जदी कमर्शियल लाइन रे चाली थिले भलो प्रॉफिट मिल थांता एटा हम काई के पिला माने एटा का इरिलेवेंट लाइन बोली कहबे नै कि आमे तो पढुचे तार कारण कोन फेल रो तो हमको कारण सेंटेंस का लुडा एटा लुडा नै जे माने भलो चले थिले और अधिक प्रॉफिट मिल थांते एटा कारण नै ना तेणु एमिति जाक हम जानि देई करी एटा अननेसेसरी बोली के काढिबा को पड़िबो एक दुई गुटे पॉइंट का मैं एक्सप्लेन करछु तुमको फर्स्ट कॉज दुई नंबर लाइन रो एंडिंग आड़ को देखो इन अदर वर्ड्स बोल के देला बेले ऊपर जोटा देथिबो तळे सेटा से रिपीट करथिबो तेनु तळ पोर्शन ता कोन हे गेला पिला माने रिपीटेड लाइन हे गेला तो एबे तुम कोन करिवो आइदर ऊपर लाइन रो चूज करके मॉडिफाई करके सेंटेंस तैयारी करिवो और तळ सेंटेंस इन अदर वर्ड्स पर जोटा अछि ताकू मॉडिफाई करके ये करिवो ले दीटा सेंटेंस को गुटे सेंटेंस कोडाले करबा अछि नै कि अच्छा और गुड कथा एमती इफ बाट एमती कंडीशंस देकी जदी हेतिले हेतंता ए जगह हमको दरकार नै पिला ना हमें कोन पढुचे माइंड रो गुड साइड रे रहबा अछि जे हमर कंटेंट एठी कोन अछि पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज फेल काई के होची तार रीजन जाको को लिंक थिबा लाइन गुडी को ही हमें कॉपी करबा अछि आ मॉडिफाई करबा अछि अच्छा तमे एठी देखो पिला माने फर्स्ट रे केतरा लाइन देला सेकेंडली आइला भितरे 1 2 3 4 चारटा अधे लाइन अछि पिला माने किंतु से आंसर रे तो को लिखछि देखो नोट्स रे फेल्यूर ऑफ पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री बोल देला मेन हेडिंग रीजन्स बोल देला तुम देखो 115 पेज तळको राइट ता तळको कोन दैछे ये चारिटा लाइन को से गुटे लाइन रे किंतु लिखछि देखो रन बाय ऑटोनोमस कॉर्पोरेशंस ऑन नॉन कमर्शियल बेसिस गुटे लाइन रे छिडे देला तुम ड्राफ्ट समरी करबो अच्छा ड्राफ्ट समर रे तुम कोन करबो एगडा को गुटे पॉइंट करके दबो फर्स्ट रीजन का हम देखले चारटा लाइन को से गुटे लाइन करके मॉडिफाई करके केमति लिखछि सेमति सेकेंडली बोल के आ गुटे रीजन दैछि ना नै पिला माने दैछि अच्छा तुम टिके बही काढी के देखुथबा अछि याड मोर वीडियो सुनि के सेड तुम जदी ए बही देखुथबो बोले तुमको भलो फायदा हबो आउ एटा सब बेल पई इंपोर्टेंट पिला माने खाली +2 पई बोल के नहे राइट तेणु करी सेकेंडली रे मध्य सिम देखो थर्डली के गला भितर सेम चारटा लाइन देछि किंतु से चारटा लाइन को से केमति मॉडिफाई करके गुटे लाइन रे कन्वर्ट कर देला रन बाय ब्यूरोक्रेट्स विथ बिजनेस एक्सपर्टिज्म एंड मैनेजरियल स्किल एटा होचे आ गुटे रीजन व्हाई पब्लिक सेक्टर फेल्स एमते पिला माने चारिटा रीजन देछि राइट 115 पेज रे का तळे ड्राफ्ट समरी रे से रीजन्स रे देखो एटा बड पैराग्राफ को चारटा लाइन रे छिडे देला
ता नेक्स्ट जो दी तीनटा लाइन दे पिला मन देखो आई सजेस्टेड दैट करेक्टिव मेजर्स should be taken by the government and industries to remove the shortcomings बोले shortcomings remove ପାଇଁ कौन steps नवा कथा से विषय रे देछि ताको पॉइंट 2 2 नंबर कर दला ड्राफ्ट समरी रे 2 नंबर करके steps for improvement बोल के दे देला हेडिंग तापर गवर्नमेंट एंड इंडस्ट्रीज टू टेक इमीडिएट करेक्टिव मेजर्स बोल के शॉर्ट कर लिखछि एबे 115 पेज रो तळे जो पॉइंट कलछि पिला माने सेटा ड्राफ्ट समरी करछि से तेरो ड्राफ्ट समरी तमे जते बेले करिवो ताको ही नोट्स मेकिंग बोली कहबे आको मेन हेडिंग सब हेडिंग एमती डिवाइड कर दबो कर दे कि फॉर्मेट हिसाब रे पकेला परे ड्राफ्ट समरी कला तार प्रणाली पिला माने ड्राफ्ट समरी कला परे का तमे फाइनल समरी करिया पड़िवो फाइनल समरी ता देखो 116 पेज रे से लिखछि सिमते तुम फाइनल समरी बोल के हेडिंग दबो पिला माने आओ ता पाखरे उडे टाइटल दबो ऊपर को टाइटल बोले को विषय रे एटा तार थीम कोन बोलीबाटा तापर फाइनल समरी जते लिखिबो ड्राफ्ट समरी रे तुम काढिथिबा पॉइंट गुडा का मिसेई की पैराग्राफ ऑर्डर रे लिखिबो पैराग्राफ भलिया कर देई की लिखिबो कंजक्शंस यूज करके जॉइंट करके निज भाषा रे लिखिला पर पिला माने तळे वर्ड्स यूज्ड एतिकी गणिबो गणिकी पकेबो सेटा भूल जीवने एटा होचे एक्चुअल तार पद्धति से पद्धति बा प्रणाली हिसाब रे हमको लिखिया पड़िबो पिला माने थैंक यू वेरी मच एमते मो अन्य रिलेटेड कांसेप्ट गुडे को वीडियो करके तुमको छाडथबी एमते मोस्ट इंपोर्टेंट जिंस गुडी को तुम लाइक आ शेयर करो पिला माने आ सब्सक्राइब भी कर देथो सुविधा हो तुमको थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग थैंक यू वेरी मच।